हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सुनुप। दोस्तों, केसरी वीर फिल्म देखा मैंने थिएटर में। दोस्तों, लेट मी से दिस, एन एक्सेलेंट सूरज पांचोली, एन एक्सेलेंट सूरज पांचोली in a film that celebrates the valor, the courage, and the unimaginable bravery of Hamirji Gohil. That is what Kesari Veer is all about. Dosto, Suraj plays the role of Hamirji Gohil, this brave warrior who stood tall and fought against the invaders, Tughlaq Empire, to protect Somnath Temple and Hindu faith. इस ब्रेव वॉरियर का जो एक ऑनेस्ट, सिंसियर एंड एब्सोल्युटली इंटेंस रिप्रेजेंटेशन जो सूरज ने दिया है उनके पोर्ट्रेयल द्वारा ऑन द बिग स्क्रीन, दैट इज टेरिफिक, टेरिफिक टू वॉच दोस्तों. इनफैक्ट दिस इज अ फिल्म एंड दिस इज अ रोल दैट डिमांडेड स्वेट, ब्लड एंड टीयर्स, एंड वो खून पसीना एक करके सूरज ने काम किया है. एंड वो जो प्रेजेंटेशन दिया है ऑफ हमीरजी गोहिल, दैट इज ब्रिलियंट, ब्रिलियंट टू वॉच. इनफैक्ट सूरज हैज imbibed the body, soul and spirit of Hamirji Gohil. And let me say this दोस्तों, when you finish watching the film you will say two things: brilliant Suraj Pancholi and salute to Hamirji Gohil for his bravery, courage and valor. No doubt about it. That is what you will say दोस्तों. In fact, let me say this, the way the film opens, वो जो इंट्रोडक्टरी शॉट है, यू आर वेटिंग फॉर आवर हीरो हमीरजी गोहिल टू एंटर, एंड द वे सूरज एंटर्स एज हमीरजी गोहिल, लुकिंग डैशिंग, लुकिंग हैंडसम, लुकिंग डायनामिक, absolutely CT-mar, Talimar introduction, and the way he takes down villains one by one, the action that unfolds, that is absolutely superb, brilliant, brilliant to watch. That establishes the character of Hamirji Gohil so very well. Suraj making sure that you fall in love with Hamirji Gohil, Suraj making sure that you understand the valor of Hamirji Gohil. That is the brilliance of that introductory sequence, the opening shot. Very, very nicely done. And uske baad, you understand who Hamirji Gohil is, what is his character all about, what is his story like, what is the romance that happens in his life, and more importantly, what is the cause that he is fighting for, how he combines forces with Sunil Shetty, and how he stands against this ruthless villain, how he fights this ruthless villain in the battlefield, how the war happens, and what happens ultimately in this hero versus villain fight, who prevails, who triumphs. ये जो स्टोरी जो आपको देखने का मौका मिलेगा केसरी वीर में, एंड जिस तरह से सूरज ने हमीरजी गोहिल का वो लाइफ स्टोरी जो दिखाया है स्क्रीन पर, that will leave you absolutely impressed, no doubt about it. And there are so many mass elevation scenes in this film दोस्तों. वो जो elevation movements होता है ना, where as a viewer you feel elevated, मैं आपको बताता हूँ, दो तीन उदाहरण मैं आपको देता हूँ. एक तो वो सीक्वेंस है दोस्तों where सूरज रेसेस, उनका एक रेस है दोस्तों, सूरज रन्स, एंड द वे सूरज रन्स विद सो मच ऑफ विगर, विद सो मच ऑफ पैशन, विद सो मच ऑफ इंटेंसिटी एंड एनर्जी दोस्तों, दैट रेस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट टू वॉच. एंड द कल्मिनेशन ऑफ दैट रेस, हु विन्स, how it happens दोस्तों, a pure mass elevation movement, absolutely CT-mar, Talimar. That is what you will experience when you see that racing sequence. दूसरा दोस्तों, इंटरवल होने से पहला 15 मिनट, वो इंटरवल ब्लॉक जो है उसके पहले वो जो 15-20 मिनट का एक्शन सीक्वेंस है दोस्तों, वहां पर आप देखना सूरज, अ त्रिशूल इन हिज हैंड, bound in chains, this blazing BGM in the backdrop, fire all across, and the action that unfollows, that action that unfolds. दोस्तों, you look at that action sequence, the way it plays out, and the way Suraj has executed that action sequence, absolutely terrific. Suraj is a brilliant, brilliant action star. When it comes to action, he's terrific, terrific, terrific in this film. That moment, the way it unfolds on the screen, dosto, the Trishul moment, oof, that is just pure mass elevation moment दोस्तों. आप देखो वो sequence, you will love it, no doubt about it. And the way Suraj has executed that action, the way he takes down all those villains in that one movement, oh, that is superb, superb to watch. The interval block, absolutely brilliant. And uske baad second half mein what you see is how Suraj combines forces with Sunil Shetty, and how they take down this villain. Do they take down this villain or not? What happens on the battlefield? It's a treat to watch dosto. Watch out for the climax. There is this sequence where Suraj, shield in his hand, like a lion, charges into the enemy lines single-handedly, alone dosto. That is again a mass elevation movement, absolutely brilliantly shot, very, very good to watch. But dosto, let me say this, wait for the ending.
वॉट यू सी इन द एंडिंग वो झंझोड़ के रख देगा आपको दोस्तों, बिकॉज इट इज अनलाइक दैट यू हैव एनीथिंग, अनलाइक एनीथिंग दैट यू हैव सीन बिफोर। जो आप देखोगे ना उस एंडिंग में, ओ हो, लेट मी रिआइटरेट, झंझोड़ के रख देगा। यू जस्ट कैनॉट मिस द एंडिंग, वॉच इट एंड यू विल बी लाइक ओफ, you will say this, that is the kind of experience that you will get दोस्तों अब एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की अगर मैं बात करूं, the film rests on the broad shoulders of Suraj Pancholi. Like I said, Suraj has imbibed the body, soul, spirit of Amirji Gohil, this brave warrior, and he has played it with a lot of passion, honesty, sincerity and intensity, and that is brilliant to watch. Two standout moments जिसका मैं जिक्र करूंगा, एक तो वो moment है where Suraj shines as an actor, where there is a face-off moment between Suraj and Vivek Oberoi. You look at Suraj's performance in that face-off moment, absolutely superb. दूसरा वो moment है where Suraj is giving a very inspirational, rousing speech to his fellow soldiers, inspiring them before they step onto the battlefield. दोस्तों the way Suraj delivers that speech, फट करके जो dialogues बोलता है Suraj Pancholi, one after the other, it is superb to watch. Suraj excels as an actor in that particular shot. ये तो उनके एक्टिंग स्किल्स के बारे में हुआ दोस्तों। अगर मैं एक्शन के बारे में बात करूं, सूरज इज एक्सेलेंट व्हेन इट कम्स टू एक्शन, इज अ वेरी गुड एक्शन स्टार. He has the body of an action hero, and the way he performs इन दोज कॉम्बैट सीक्वेंसेस, हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीक्वेंसेस हो या फिर तलवारबाजी हो या फिर जिस तरह से वो वॉर सीक्वेंसेस में एज अ वॉरियर द वे ही हैज परफॉर्म, शोकेसिंग दैट करेज, दैट ब्रेवरी, दैट वैलर दैट वाज नीडेड. सूरज brilliant as an action star. Let me make a point about this scene once again, the way Suraj charges with the shield in his hand in the climax sequence into the enemy lines. Of what a moment, what performance by Suraj Pancholi, absolutely superb to watch, and the ending that follows, so brilliant, superb Suraj Pancholi. Like I said before दोस्तों, when you finish watching this film you'll say brilliant Suraj Pancholi and salute to this brave warrior Amirji Gohil, no doubt about it. दोस्तों सुनील शेट्टी, अन्ना, we love सुनील शेट्टी is brilliant, charismatic, बहुत अच्छा एंट्री था उनका, and when he combines forces with Suraj Pancholi to take down the villain, very good to watch, an absolute treat. Watch out for that moment where Sunil Shetty stands with something in his hand, that is very good to watch दोस्तों, very nice. Vivek Oberoi, ruthless as the villain, very good intimidation, very good villainy, very good tyranny, the kind of tyranny that you would love टू हेट, वैसा वाला एक्टिंग परफॉर्मेंस विवेक ओबरॉय ने दिखाया है, पोर्ट्रे किया है इस फिल्म में. दोस्तों गो एंड वॉच केसरी वीर टू अंडरस्टैंड द लाइफ, the valor, the courage, and what Amirji Gohil did for his motherland to protect Somnath Temple, and what Amirji Gohil's life was all about. To know that, go and watch Kesari Veer. And let me say this, when you watch that story, when you watch that life story unfolding in front of you, will say brilliant Suraj Pancholi, great brave Amirji Gohil. दोस्तों 4 stars out of 5 for केसरी वीर and 4 stars for सूरज पांचोली's brilliant performance. आप भी जाइए देखिए, and देखने के बाद मुझे बताना आपका टेक. चलिए, फॉर द मोमेंट टाटा.